Good morning, my dear friends. Welcome you all in this particular session, which is organized by BoS for your benefit. And today, myself, Dr. N.N. Sengupta, and my esteemed colleague, CM Mayank Jain, will be taking you through to this particular subject, paper 4 or of group 2, that is cost and management accounting. As you know that this is a practical subject, and we have seen that a lot of students get stuck into this particular subject. There are specific reasons for that, and one of the major reason is a lack of practice. And this is a paper where your conceptual clarity is required, at the same time your practice is also required. More the question you will practice, it will be better for you. So how we have planned today's session? Initially, very quickly, Mayank will be going through the syllabus and the weightage part. And the question paper structure, obviously the question paper which you have seen for the May 2024, you can take that as an example, as a model question paper, and you can go through. And the model test paper, obviously we have also published model test paper for the last examination, for the May 2024 examination. At the same time, we have published the model test paper or mock test paper for this examination as well, for the September examination. So let us start, and what I will request you, that whatever the query you have in your mind, you please ask those questions. Zoom link, I think, has been shared with all people, I hope. And if anybody wants to know the Zoom link, then also I think we can provide that. So just let us know that what are your requirements. So accordingly, because we want that maximum of you should be able to join through Zoom link as well, and you should be able to ask question. So without wasting any further time, mainly it will be query based, but some of the things, some of the technical things we'd like to discuss in the class. Initially, as I told you, that based on the syllabus, so this is the point of discussion which we will be doing, section-wise weightage and skill-wise weightage. Very briefly, we will be giving it to you. Then structure of question paper we'll be sharing with you. A summary of each chapter with important points to remember, that will give preparation tips, how to revise an examination, do's and do nots. And we have chosen questions, two case scenario question and some of the MCQs, because why you are giving so much emphasis on the MCQ part and the case scenario part, because this has been introduced newly. Yeah. And many of the students are unable to match with the time requirement to be spent for this case scenario question. So one of the objective is to make yourself familiarize with this particular concept, and so that you are absolutely comfortable while attempting the questions in the examination. We can see that many of you have joined through the Zoom link as well. So going forward, this all just very minutely, if you can see that this is the first section, overview of cost and management accounting, where 10 to 15% weightage is given, that is 11 to 18 marks. And basically the first chapter, the introduction chapter and cost sheet is included. Then there is ascertainment of cost and cost accounting system, that is material, employee cost, overhead, activity-based costing, all things are included. This is the second part. Then the third part, the 5 method of costing is included: unit costing, job costing, batch costing, process costing, costing of service sector. Please keep in mind that contract costing, the sixth one, is not there in your syllabus. And then standard costing, marginal costing, and budgetary control, which is having 25 to 30%, that is 30 to 35 marks. So marks wise, you can see the categories which is written here, and accordingly you can see. But thumb rule, let me tell it to you, it's better not to keep too many things in mind about the weightage and all. And you prepare all the chapters with equal importance, because you never know that which question is going to be easier, which question is going to be difficult. Sometimes what happened, that a chapter which you are not prepared very well, easy question comes from that chapter. So if you are well prepared, if you are thoroughly prepared,
then it will be easier for you to get accustomed with that particular question. So like it's when you will practice, like in cricket we do the net practice. So while doing the net practice, you should be preparing for all kind of bowling, whether it's a short bowling or yorker bowling or pace bowling or spin bowling. Similarly, while preparing for CA examination, you should be preparing for any kind of question. Good question, difficult question, easy question, a lengthy question. Application of mind is very, very important while attempting the question. Skill wise, we all know 20 to 30% is the knowledge and comprehension, basically the theoretical question, and then balance part is going to be 70 to 80%. Now, question paper structure. I'm sure that you all have seen the question paper structure. Any of you have any question? Any question any of you have? You can send through the link, as well as you can ask through the Zoom as well. Okay. So last year question paper, if you have seen that, probably you have got the idea of how the question paper structure is going to be. There was a case scenario based MCQs. There was 2 case scenario, 5 question each in 1 case scenario. Then there was 2 case scenario. So 10 marks plus 10 marks, that is 20 marks. And then there was 5 caselets of 2 marks each. So this was the structure of 30 marks. And then balance, there was 5 question, out of which 4 question you needed to attempt. And this was of 56 marks. So total was 100 marks. So this is in brief the structure. 2 part. One is going to be the division A, that is going to be the case-based scenario, and then division B. There will be an internal choice question in the last theoretical question also. So there will be 1 theoretical question normally we see in this particular question paper. A lot of practical question. This preparation of how to be done, how to study to be done, I'm sure by this time you are well. But what will advise you that please practice the question as much as possible. Please go through the question paper, previous question paper, RTPs and MTPs. Try to understand that what type of questions are asked and clear your concept. Until unless your concepts are clear, you will not be able to cope up with this particular subject of cost and management accounting. After clearing the concept, you practice as much as possible. And while practicing, if some of your concept is not clear while practicing, I'm sure those concepts also will get cleared. That is from our practical experience. And there is Saransh is also available. You can, while revising, you can refer that also. Then I'll come to the good habits later on. First, let us discuss the technical part of it. There was some question for you, but I am sure that we'll discuss those things later on. 1 or 2 chapters, maybe we can start initially. First chapter, and then we'll come back to question. In the very first chapter, these are the concepts basically you need to understand. Objective of cost accounting and management accounting, use of information technology in costing nowadays. ERP is very, very important. Many of the organization is implementing this. What is cost object? What is cost center? What is the difference between the two? Then who are the users of cost and management accounting? What is the scope? What is the role and function of cost and management accounting, and classification of cost? When you will be doing the classification, please keep in mind that any type of classification, any type of definition may be asked. There are certain small definition which is given concept wise. Please go through all. So these are the introduction chapter. And then in the second chapter, this was a question basically, cost unit which is used in the power sector. So if you can answer this question through the chat, it will be very nice. We'll see that whether your answer is correct or not. Going through, then the material chapter. Material chapter, there are a process, material procurement, then inventory control,
different kind of accounting treatment, not only their definition, waste, scrap, spoilage, defective, even obsolescence. Definition and their treatment is very, very important. I think in the last exam also there was some question on this, and many times we have seen the question on this comes. Then material storage and record, bin card, stores ledger, stores control accounting, difference between bin card and stores ledger. Many times question is asked. Then the valuation of material, LIFO, FIFO is the basic two technique. Obviously, LIFO is, since we do not recognize that under AS2, we may not be doing it for official purpose, but for the academic knowledge purpose, we may go through that. And then other techniques also you may go through for this particular chapter. These are the basic formulas you must go through for calculating EOQ, for calculating different kind of level, inventory turnover ratio, inventory turnover period, all these things. Then how the safety stock is calculated, how the total inventory cost is calculated, how ordering cost and carrying cost is calculated. Mind you, total cost, when you are calculating, it is having two parts. One is the ordering cost and carrying cost. So you should be knowing how to calculate each component, and then if you were to add the total, you will be finding the total cost. Because different kind of question comes where it will be said that you calculate the EOQ. Now you have to see the option that when your quantity is increased, quantity per order, that is economic order quantity is increased, you may get some discount. So you need to find out the cost benefit analysis, whether getting more discount will be much more beneficial for you. So that's going to be very, very important, that how you can go through this. So this is basically the way we can understand this particular chapter. So I think we can start with the yes, Pranav, thank you very much. Kilowatt hour is the correct answer. Unni Krishnan, thank you very much. Your option is absolutely correct. So this is first two chapters, just an introduction we have given. I think let's start with the practical question as much as possible. So we'll be starting with a question of material cost, which is a case scenario question, I think, which we have given in your material also. So this is the question. Slowly we'll go through. I've given you the introduction little fast because all these things are known to you. Now slowly, very peacefully we'll do this question, and I'll be there with Mayank as well, and we both will try to explain this particular question. First and foremost, may I request you to go through the question and understand what are the significant part of this particular question. This was in RTP series 1, that is the RTP which is given for September examination, and this is the question. So take 2 minutes, just go through the question, and then we'll highlight some of the very important point. Pen. Can you see the PPT? Yes, sir. Okay. So just go through the question. We'll be discussing this in detail. Again, we are giving too much emphasis on this case scenario based question because you have to manage the time as well. So we will be showing the detailed solution, but it is not easy, not essential for you to show the detailed calculation at all. So you may scribble and get the correct answer of the question. So just go through it. Mayank, you can highlight the major points to the students and read it. Good morning, friends. This is CA Mayank this side. So we are starting with the question. The X trade. X trade is an unregistered supplier under GST. This is the main point to focus because when you read the question, you know CGST and SGST is available, for which credit is available. So we have to focus on that part also. Hope you have read the question. Please answer if you have read the question. Whether you have gone through the first this page.
where the listed price is given, trade discount is given, CGST, SGST is given, toll tax is given, and then two important item, Mayank, you can explain. Yeah, one important item to be focused is other expenses, which is 2% of total cost. As you can see, it is given total cost. There, the students may confuse with the uh, cost before the other expenses. But here you have to focus on total cost part. And other thing you have to focus is 20% shortage in material. So when you calculate the good units, you have to deduct the 20% shortage from the total units of 5,000 units. Correct. So these are the two things which he was trying to tell. This was one. Okay, no problem. We'll just this one. No problem. We can go through the question. Carry on. So after going through the case study, what you can do, you can try to find out that what are the question which has been asked. Okay. So when you will be asking, you will be getting those questions. You can go through those questions and then get the idea that what has been asked in the MCQ, and then you can go back to the case scenario once again. Carry on. What are the question? You can just go through, and then we'll go back to the case study once again. We'll wait for 2 minutes. You can read the question. Gone through? Yes, sir. Okay. So this is the first 3 question, and then these 2 question. Okay. So these are the 5 questions. So let us go back to the case scenario. This one. Yes. So this one point was there, other expenses, and then 20% shortage in material was also there. Now let us start discussing the solution once again. No problem, no problem. We can start discussing the solution. So first part, shall we start from here? First question. You can read the first question. Students, you can go through the first question, what has been asked. Then we can go for the solution of the first question. So the question demands is
the cost, total amount of cash discount received from the supplier, and how it is treated in the calculate material cost. So we go to the solution. Here it is given. The listed price is already given in the quotient, and the trade discount is given 10%. So the taxable value comes to 2,25,000. So you can see the GST is just a second, students. As you can see, the listed price is 2,50,000, and the trade discount is available at the rate 10% on the listed price. Now taxable value comes to 2,25,000. As you can see, the supplier X trader is an unregistered supplier, so the GST amount of 18%. Please keep this in mind. GST amount of 18% is added to the cost of the tax, added in the taxable value. Now the total amount payable to the supplier is 2,65,500. Now it is given in the question that supplier has made the payment within the 21 days, and in MCQ it is given the supplier has made payment within the 30 days, and it is given that if the supplier made payment within the 30 days, then 10% discount is available on the taxable value, because cash discount is not available on the GST value. So the cash discount comes to 22,500 on the value of 2,25,000. Now the net amount paid to the supplier is 2,43,000. If you have any doubt, you can ask me. Any doubt, friends? So the first question is asked that what is the net amount to be paid? Now let's move to the second part of second requirement. What is the amount of other expenses and how it is treated in the material cost? So calculation of other expenses, probably the most typical part of this particular MCQ. So a detailed calculation we have shown. Please keep in mind, you are not required to show this calculation in this way. You may scribble it as per your requirement, as per your convenience. Your major objective should be to tell the correct answer, right? As you have already seen, we have calculated the taxable value of 2,65,500 in earlier part. Now we have given the other expenses like toll tax, freight, insurance, and commission brokerage. We'll add that amount in the material cost. Now the cost of returnable container is added only if amount is not refunded fully. Here it is given the amount refund is 20,000 out of 30,000. So net cost of 10,000 is added to the total material cost. So when you will be giving the treatment of this refundable container, try to see what is the amount deposited and what is the amount refunded. So the difference between those two only you need to take as the cost of returnable container, what has been explained to you by CMI. Now we have to focus it total cost. As we have calculated the cost before the other expenses, now we will divide that amount 3,07,720 by 98%. So it comes to the 3,14,000 the total cost value. Now, so how it has been calculated? 307,720 into 2 divided by 100 minus 2, because 2% is your other expenses. So 100 minus 2, 2 by 98. So many of us commit mistakes. Many of you may commit mistake here. So be careful while calculating these other expenses. Please carry on. Now we'll add the other expenses before the total part. Now total part comes to 3,14,000. Now it is given in the question. I hope this part of the requirement let them, if you have any question, Kiranji, Biresh, Pranav, Unni Krishnan, whoever is there. If you have एक डाउट था हाँ जी बोलिए सर, शुरू में तो लिखा है अनरजिस्टर्ड जो सप्लायर है और बाद में जो क्वेश्चन का डिटेल लिखा है तो उसमें लिखा है क्रेडिट अवेलेबल है। सर यहाँ डाउट हो जाता है। कहाँ पे? यही ट्रिकी क्वेश्चन।
इसमें यही ट्रिकी पार्ट है कि हम जब जीएसटी हम नीचे शो कर रहे हैं, ऑफकोर्स उसके क्रेडिट अवेलेबल होता है, वो नीचे इसलिए दिया है, और ऊपर इसलिए ही स्टूडेंट को फोकस करना पड़ता है कि लाइन बाय लाइन उसे रीड करके एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना है। ऊपर स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन करा है अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, तो उसे जीएसटी जो है उसे अवेलेबल नहीं होगा, उसका क्रेडिट आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। अगर हमें आईटीसी तो अवेलेबल फिर नहीं, क्यों लिख दिया? उसमें जीएसटी का जो क्रेडिट अवेलेबल होता है वो इसलिए लिखा है। ऊपर आपको यही क्वेश्चन में रीड करना है कि वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, लेकिन नीचे आपको क्रेडिट अवेलेबल देख के ये कंफ्यूज किया है कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना है कि अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तो क्रेडिट अवेलेबल हो या ना हो, वो उसको अपनी आईडी से उसको ले ही नहीं सकता वो। ओके सर। एनी अदर डाउट? फिर इसको नोट नो देख सर। के करना है क्या? नो नो, जरूरत नहीं है। अगर लेकिन आपको एग्जाम हॉल में जैसे होता है ना, कभी कभी खुद से सेटिस्फाई करना होता तो आप दे दो, बाकी ऐसे जरूरत नहीं है। लेकिन आप दे दो, आपको लगता है ना ऐसे चीजों में जो भी होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में आपको लग रहा है कि इसमें 2 ऑप्शन हो सकता है, यू मे गो फॉर ए नोट। सो अकॉर्डिंगली आपके आपको अपना माइंड भी क्लियरिटी हो जाएगा उसमें, और थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होगा एग्जाम हॉल में बिकॉज it's a 3 hour things, 3 घंटे में how your mind works, how your hand works, how your application works, so that's very important. So अपने आप को जितना आप पैम्पर कर सकते हो आप करो ड्यूरिंग attempting the question paper. That really helps. कॉन्फिडेंस कम नहीं होना है, और अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है कि yes I will be able to do it, और जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ठीक है ना? होप आप कोई डाउट नहीं होगा आपको इसमें। पर सर एमसीक्यू में तो 2 ऑप्शन दे नहीं सकते। नहीं, 2 ऑप्शन नहीं दे सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं दे सकते। ऑप्शन तो एक ही होना है, और अभी तक पेपर में तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। हम लोगों ने भी जो आरटीपी दिया है, एमटीपी दिया है, आप देखोगे एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इसमें तो नोट उस हिसाब से आप नहीं दे सकते हो, बट आपके हिसाब से जो बेस्ट आंसर है आप उसको करिए। आप ये मत सोचो ये होता तो क्या होता, don't think in that way. Try, give your best, what best you think is possible, you try to do it. आप एग्जाम हॉल में अपने आप को कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना? Now let's move to the next part of the question. What is the amount of GST and how will it be created in the cost sheet? Now let's move to the solution. We have already calculated the amount of GST, which comes to 40,500. And since the GST credit is not available, it will form the part of the cost sheet, the cost of the material. You carry on, I'll see the question. Now let's move to the fourth part of the question. What is the total material cost chargeable in the cost sheet? We have already calculated here the total material cost, which comes to the 3,40,000. We have already seen it. Now the point to be focused is number of good units and the cost per unit of material received. Now this is the main point to be focused, as it is given in the question 20% shortage is expected. So total units are 5,000 units. When there is a shortage of 20%, we will deduct that shortage of 1,000 units from the total units. Now the good units comes to the 4,000 units, and this 3,40,000 cost is divided in the 4,000 units, which comes to the 78 rupees 50 paise. So you have to focus on the 20% part for good units. Is it clear? Is it clear? And when you have divided by the total Yes, sir. number of units, then it has been cost per unit. Is it clear how the things has come? So Yes, total sir. cost of material, along with that we have added the shortage material. That is very, very important. Sir, a question. Yeah. So here it is mentioned that amount of refund on returning the container. So they have mentioned that the like Axtrade has returned the containers. But if the returning part is not mentioned in the question, then what will we do? Whole Like, will amount. we take the entire 30,000 as Entire. cost? Entire. Assuming that nothing has been returned. Okay, all right. What's your name?
Sir, camellia. Okay, very good question. Carry on. I am having two question sent through chat. If you kindly allow me, then I can take those question. One is from Yashvardhan Tyagi. Namaste Mayank sir and Gupta sir, and I'm preparing for January 2025 and about to finish all my classes in the morning in the coming days. I want to know how many days it will take to completely study and study material in detail after the BO classes. It will depend on you. Obviously, it's a subjective question that how much time you will be taking, but your major emphasis should be to study the concepts and prepare your own notes, so that again and again you should not go for the study material and then you practice the question. And if it will be better if you can practice the question twice. First time when you will be practicing maybe the illustration part, you can see the solution also simultaneously, but practical question which is given at the back side, you should not be referring to the solution. Only after solving the question you should refer to the solution. Okay, and then later on second time where you can just practice in short and scribble it and try to understand where you are going wrong, and then you start practicing the RTPs, MTPs and all those things, previous year question paper, so you will be making perfect. While attempting the MTP, please keep the time framework in mind. You must try to attempt the question in 3 hours only. Even somebody should come and disturb in between as well for a few minutes, so that you are habitual with the total process how it is to be done. So time management also becomes very important along with the preparation for the subject. So that's why more and more practice is required, and conceptual understanding is required, because many of you, if you think in the exam hall, maybe you will be able to crack that question, but it will take additional time, and we cannot afford to give any additional time during the examination setup. Is it clear? Jasvardhan? Sir, I have a doubt, sir. Yeah. Sir, in question they have said CGST and SGST credit is available. So still they have added in the answer. Because it's an unregistered supplier, it's a general information which is given in the question. Okay. Okay. That's the same question, in fact, some other student also asked. So, Jasvardhan, is it clear? There is another query of Naval, but I will be taking that after solving the balance to MCQ. Mayank, please. Solve? Yeah. So, any doubt in any of these MCQs? So, MCQs, when you will be solving, please do not write everything and then try to solve it. Write the item in short, add it. One, it is done. For an example, in this question, I can show it to you. Once you will be calculating this total amount payable to supplier, this 2,65,500. In the second part, you should not calculate it again. Already done. So you should start with this, and no need to write it. Only you add the items and try to calculate. Even without writing, if you can calculate correctly, that also will do. Okay, so try to save time. You need to arrive at the answer at the shortest possible time while attempting the case scenario question. Because in the descriptive part, you need to make the presentation. Am I correct or not? So try to save some time. It will take a little extra time during MCQ. Let me tell it to you honestly. But if you practice more and more, then slowly you will see you'll be able to save 5-7 minutes. And those 5-7 minutes will be very useful while attempting the descriptive question. And Naval is having a question. Good morning, sir. I have completed the course from ICAI BoS classes. Thank you very much. I was expecting that after passing foundation exam, I would be able to give exam September. Now solving MTPs previous year. Please guide me. There is a lot of distraction. There should not be any distraction in your mind. Your focus should be there. You know, we used to give the example of Arjuna and the eyes of the fish. Okay, so if your focus is there, there will be no distraction. Take
yourself off from the social media. The whole life is there for that. So give away all the distraction and try to focus what you want to achieve. What is your role? What is your determination? What you want to achieve? How you can make your parents happy, your teachers happy, your institute happy, your circle happy. That is by clearing the examination, by having a good knowledge about the subject. So please don't go for any distraction and try to read yourself. Okay, and maybe at a place where you feel most comfortable. So don't lose your determination, don't lose your hope, or what I will say, expectation. अपना determination बना के रखो. अंधेरा होता है तो उसके बाद उजाला भी आते हैं, we all know. कभी कभी आते हैं ये phases students life में particularly, but निराश नहीं होना बेटा. Keep yourself motivated, and I'm sure you will be able to clear the examination. So all the best from our side, from the institute side, and from our personal behalf as well. Okay, Naval, share it, and you can do it. Muskan, I have given the examination. Both group could not clear. Why? What should be the strategy in group 2? Group 2, there are 3 paper. Costing is conceptual clarity. If it is there, only you need to practice. And second is financial management, which you need to focus a lot, because there are again a lot of practical question. And then strategic management and the auditing paper are there. Auditing paper you need to understand, you need to prepare your notes, you need to write in a detailed way. And strategic management, we all know that how it is to be prepared. So focus on this particular 2 paper along with the auditing paper and strategic management paper for group 2. And group 1, obviously there are a paper of taxation, there are paper of accounting, and there are paper of law. So accounting and taxation are the numerical paper, already we know. And Muskan, you see that in which subject you have not done well. If it is costing, if marks is very less, then you have problem in concept. If marks is okay, then your concept is clear, you lack practice. So accordingly, you make yourself your treatment for yourself, right? And you only have to tell yourself, you only have to guide yourself. You have to become your own boss, how you can motivate yourself. Naval, it's our pleasure, and we are always there. The Board of Studies is always there to help you. The institute is always there to help you. Thank you very much for your kind words. So shall we go for another question? I think so. These are the solution. Another question, we can go for marginal costing. Very interesting question. And just relax a bit and go through the question. This is the question which is we have given in the mock test paper, and many of you have appeared in this mock test paper. We thought that since there are a lot of queries in this particular question about understanding, let us try to understand this question first, and then we'll go for the solution. Just give them 2 minutes, I think, and major points, the important points you can underline in between, so that they can, you need to do it for yourself. We are here helping you, but in the exam hall, in the practice time, you need to make points for yourself. And as I told you, the mock test paper, I think, is one of the very crucial thing. Practice in time bound manner after clearing the concept. And if you can do it, if you can be sincere for yourself, I think it's all done. Right, Camelia? Yes, sir. Okay. Just go through the question. We'll solve this question as well. We'll solve few other MCQs. Some of the chapters also I'll discuss. And any question, what is there in your mind, whatever is coming in your mind, you please ask. आपको संकोच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. Anything which is coming in your mind, आप अपना दिल खोल के BOS को पूछ सकते हैं. We'll try our level best to solve your query through this particular session.
शुरू करो. Hope you have read the question. So we are starting with the question. XYZ Manufacturing Private Limited is a permanent company. So there is a normal information given from XYZ till packaging. You can read that part. There is nothing, any important information given in that part. Only important information given is it operates 25 days a month running in a multiple shifts. So this is the information if it is used in the later part. So now comes to the main part. The fixed cost per month is given, the factory rent, depreciation, admin costs, salaries, and the total fixed cost. Now we have to focus is number of units produced per month. This is 10,000 units, and the note is given in the last month there is an additional special order of 2,000 units. We will use that part in later part of the question, and the selling price per unit is given. Now move to the next part, additional information. So there is a 2 points given, the cost of raw material and cost of labor. You have to focus on calculating the cost of raw material and cost of labor, which is the main part of this question. The information given is raw material include copper, plastic, and other material. There are 3 materials given. The price of copper is 80 rupees more than the cost of plastic, while the cost of other materials twice that of plastic, and total raw material cost is 210 more than the combined cost of copper and plastic. Here we have to use the equation method. We have to take the plastic as x. We can show you here the cost of raw materials. I think they can go through the MCQs once before going to the solution. So first MCQ says that you need to calculate the contribution margin. That is contribution. Okay. So contribution calculate करने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? कोई बता सकते हैं? Sales and variable cost. Sales and variable cost चाहिए. तो you have to find out sales and variable cost. और अगर sales and variable cost मिल जाता है, then contribution calculation is very easy for us. So we will be focusing on that. Second question में जो पूछा है आपको, in the second question it has been asked that determine the break even point in sales. Break even point कितने टाइप के होते हैं? In units and in rupees. So break even point can be two. One is in unit and one in sales. Actually, there is no difference because unit, if you can calculate, multiply by the selling price, you will get sale. Or if you get the sales amount, if you divide by the unit, then you will get per unit. Okay. And if you don't have unit contribution, then you have to calculate the sales dividing by the PV ratio. Is the concept clear? Yes, sir. Third one, target profit is given. So when the target profit is given, what you can calculate is target contribution. You can calculate contribution, target contribution. And when you can calculate the target contribution, if you divide it by PV ratio, you can calculate sales, right? So while going through this question, you what I will say, try to understand and try to adjust, try to frame your mind in such a way. Then what will be the impact of break-even point if the variable cost increase by 10%? So variable cost increase होने का मतलब क्या है? Your contribution will change. Am I correct or not? So contribution change होने से आपका PV ratio भी change हो जाएगा, आपका break-even sales भी change हो जाएगा. So accordingly you need to calculate the break-even point. और last वाला जो question है, calculate the margin of safety in percentage. Margin of safety calculate करना है. Sales is given and condition is same. Variable cost जो है वो 10% increase हो रहा है. यहाँ पे तो condition same है, लेकिन मयंक ने जैसे बोला है, इनके दिमाग तुरंत चल गया. बोला सर ये जरूरी नहीं कि 10% इंक्रीज ही होगा. सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एमसीक्यू देयर मे बी 10% डिक्रीज. अगर डिक्रीज होता है तो अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं करना है. इन बोथ क्वेश्चन नंबर 4 and 5 द कंडीशन इज सेम, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 10%. एनी अंडरस्टैंडिंग, एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? नो सर. ओके. मुस्कान, आपका जो मार्क्स हैं कॉस्टिंग में 24 है, यानी कि आपका कंसेप्चुअल इश्यूज भी हैं. सो कंसेप्चुअल इश्यूज को आप अपना क्लियर करो, क्लियर योर कंसेप्ट.
and then you practice as much as possible. You have done well in FMSM, okay, not excellent, and audit ठीक है, और improve कर सकते हो. So थोड़ा सा और improve करोगे and you give a special focus, मुस्कान, to costing, so आपके अंदर भी मुस्कान आ जाए, है ना? ठीक है, करना है and you will be able to do it. Now we start with the contribution margin per unit. So here information given is raw material cost. We have to calculate that amount. And next information given is labor hour. बहुत slowly इसको करिए, because इसमें आपका जो एक मेजर इंफॉर्मेशन है वो नहीं है, दैट इज रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन. इस क्वेश्चन में एक ही ट्रिक है, वो है ये. वो अगर आपने कैलकुलेट कर लिया, बैलेंस तो आपका बाएं हाथ का खेल है, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, एंड आई थिंक स्लोली आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, एंड लेट अस अंडरस्टैंड दैट. And the next part of the question is labor hour rate. We have given the labor hour rate of 100 rupees per hour. You have to focus here is total labor hour used in the next month is last month is 36,000 hours. And in information we have given is we have a special order of 2,000 units, which is more than the, which is in addition to the 10,000 units. So the total units produced last month is 12,000 units. So, and the utility cost is given rupees 100 and the packaging cost is given rupees 50. Now move to the requirement of the question, contribution margin per unit. So here we are calculating the आई थिंक इनको आप लोग साथ साथ इसको करते रहो. कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है आपको पता है, लेकिन हमें जो पता नहीं है आप वहां से शुरू करो. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, रॉ मटेरियल we कैलकुलेशन. start with the raw material calculation. Here we have to use the equation method. आप लोग सब लोग नोटबुक में करो इसको, वेदर यू हैव डन इट अर्लियर और नॉट, आप साथ साथ नोटबुक में करते जाओ, एक ही बार में ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एग्रीड ऋतुराज? Yes, sir. Yes, sir. गुड. यस सुनील. तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि हमारी प्लास्टिक की हम बेसिस मान के, हम एक्स मान के हम आगे सॉल्व करेंगे. जो कॉस्ट ऑफ कॉपर है उसके लिए हमें इक्वेशन गिवन है, हम यूज करके x प्लस 80 करेंगे. कॉस्ट ऑफ अदर मटेरियल है वो ट्वाइस है प्लास्टिक का, हम 2x करेंगे. उसके बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ टोटल रॉ मटेरियल गिवन है वो 210 मोर देन द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कॉपर एंड प्लास्टिक. सो वी विल इक्वेट द इक्वेशन. एकदम आराम से सोचो आप लोग, आराम से. एग्जाम हॉल में इतने आराम से नहीं सोचना है, अभी सोच सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं. कॉस्ट ऑफ कॉपर इज 80 मोर देन, सो एक हमने प्लास्टिक का ले लिया है तो ये 80 मोर मतलब x प्लस 80. आपको ये सब लिखना विखना कुछ नहीं है, आपको बस कैलकुलेशन जो फाइनल है वो लिखना है. अदर मटेरियल ट्वाइस है यानी कि 2x है, तो तीन चीजें आपके पास हो गया, प्लास्टिक हो गया, अदर मटेरियल हो गया, और आपका जो है कॉपर हो गया. ठीक है, अभी रॉ मटेरियल की इक्वेशन बनाना है. क्या बोल रहा है? टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज 210 मोर देन कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कॉपर एंड प्लास्टिक. सो कॉपर और प्लास्टिक कहाँ है? कॉपर 80 है और प्लास्टिक जो है वो x प्लस 80 है ना? तो दोनों को ऐड करो और क्या हो जाएगा? 210 मोर, यानी कि 210 ऐड करोगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा. डाइजेस्ट हो पाया कि नहीं हो पाया बताओ? कोई भी मन में डाउट है तो बताओ. एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन योर माइंड? जो चैट के थ्रू है वो, या जो आप जूम के थ्रू है वो भी. ओके, क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके, सो अभी ये अगर इसको सॉल्व करोगे, ये हमने पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाया. सो सारे जो एक्स है वो लेफ्ट साइड में ले जाओ और सारे जो न्यूमेरिकल फिगर है वो
राइट साइड में ले जाओ, क्लास 5 है ना, वेरिएबल इक्वेशन बोलते हैं इस चैप्टर को, 5 या 6 से शुरू होता है। सो सारे एक्स को लेफ्ट साइड में ले जाओ और जो फिगर है उसको ले जाओ, एंड यू विल गेट दैट एक्स जो है आपका वो 105 है। एक्स क्या था हमारे लिए बेटा, एक्स क्या था, कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक। एक्स है कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक अगर आपको पता लग गया तो आप कॉपर का कॉस्ट निकाल सकते हो। यस सर। कैसे? सर 105 प्लस 80 सो वो भी 30। हो गया, कॉपर का हो गया। आप बाकी मटेरियल का कॉस्ट निकाल सकते हो। Yes, sir. 5 ऐसे बेटा, multiplied by 2. The 2x. 2x यानी कि 105 इंटू 2। सो टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हो, यानी कि प्लास्टिक प्लस कॉपर प्लस अदर मटेरियल, ये हो गया 500। सो इतनी सी चीज है, जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा पढ़ना है, और ये आप रफ में भी कैलकुलेट कर सकते हो। और ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास एक बार आ गया तो आप समझ लो पूरा क्वेश्चन आपके मुट्ठी में आ गया। अब वेरिएबल कॉस्ट बताओ मयंक, बाकी वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल तो आपने कर ही लिया है, बाकी जरा क्वेश्चन में चले जाओ, क्वेश्चन में नहीं तो दिखा देते हैं इनको। Here the other part of the variable cost, labor cost हो गई, utility cost and the packaging cost. So we have to calculate the labor cost, labor rate per unit. Now we have information given. Labor rate जो हमारा है 100 rupees per hour है. Total labor hour used in the last month were 36,000 hours, and production units last month were 12,000 units. Now we'll calculate the total labor cost by multiplying the total number of hours into the labor rate, which comes to the 36 lakh, as you can see. Now आराम से देख लो आप लोग, कहीं पे कुछ डाउट है तो बताओ। लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे हुए हैं? लेबर आवर की जो रेट है वो दिया हुआ है और आवर भी दिया हुआ है, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन यूनिट जो है वो 12,000 है, 10,000 नॉर्मल में और 2,000 का एक स्पेशल ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। सो पहले आपने ये 100 इंटू 36,000 किया है तो 36 लाख है, और हमने जो यूनिट है उससे डिवाइड कर दिया, 36 लाख डिवाइडेड बाय 12,000, वी हैव गॉट पर यूनिट लेबर कॉस्ट इज 300। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हिमानी, सुनील, ऋतुराज, किरण जी, क्लियर। नो नो क्लियर। तनिष, नवल, मुस्कान, बहुत सारे और भी लोग हैं, सबका नाम नहीं ले रहा हूं। जो भी है, किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछिए। तनिष, आपका प्रोसेस वगैरह का क्वेश्चन मैं बाद में लेता हूं, पहले ये क्वेश्चन एक बार कर लेता हूं बेटा, ठीक है ना? नहीं, इंटर प्रोसेस का जरूरी नहीं है कि आपको पूछेंगे नहीं, हो सकता है इस बार ही आ जाए, क्या पता। आप गेस वर्क मत करो, कुछ भी प्रेडिक्शन मत करो कि ये आएगा ये नहीं आएगा, नोबडी नोज। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, ठीक है ना? पक्का बैट्समैन होना है आपको, पिच कुछ भी हो आपको बैटिंग करके आना है, ठीक है ना? So, यस। so how can we increase our speed in solving the MCQ questions? मोर एंड मोर प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करो। और लिखना डिटेल में नहीं है, आप लोग अभी भी एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव के तरीके से लिखते हो। you have to just scribble and solve. पढ़ो फटाफट, पहले पहले सिनारियो पढ़ो, एक बार एमसीक्यू देख लो, और फिर केस सिनेरियो के बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करो। एक ही बार में सेम केस सिनेरियो बार बार पढ़ोगे तो नहीं होगा। केस सिनेरियो एक बार देखो, फिर एमसीक्यू के ऊपर फोकस करो कि पूछा क्या है, फिर आप केस सिनेरियो जाके उसको सॉल्व करना शुरू करो, और देखो उसपे कहां पे आपको इंफॉर्मेशन की कमी है, उसको आइडेंटिफाई करो, और बाकी चीजें आपके उसमें आ जाएगा। और फॉर्मूला वगैरह लगाने में आप ज्यादा टाइम मत लगाओ, कैलकुलेशन करने में टाइम मत लगाओ, और वो ना लिखना है आपको। पीवी रेशियो कर रहे हो, आप लिख रहे हो कंट्रीब्यूशन इतना है, सेल्स इतना है, ऐसा नहीं करना है बच्चे। आपको तो पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन बाय सेल कैलकुलेट करके आप डाल लो, ठीक है ना? और जितना आपके पोर्टल में डाला हुआ है, जो भी आरटीपीस पिछले बार का है, इस बार का है, आप सारा प्रैक्टिस करो। आपने क्वेश्चन कर रखा है तो भी प्रैक्टिस करो। तो केस सिनेरियो के आपको टाइम सेव करना ही करना है। लास्ट टाइम में हमने जो देखा है, जो सुना है उसमें, कि बहुत सारे लोगों का टाइम इसमें ज्यादा लग गया है, तो आपको इसमें टाइम रिड्यूस करना है।
अगर 5 मिनट भी इफ यू कैन सेव, जो आपका नॉर्मल स्पीड है, यू कैन डिवोट दैट एक्स्ट्रा 5 मिनट इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। प्रैक्टिस करो, और एमटीपी जब भी देना, आपके घर पे जो भी अवेलेबल है आप उनको बोलिए कि मेरे को 3 घंटे में पेपर देना है, घड़ी रखो सामने, और 3 घंटे में आपने जो पेरेंट है या जो भी घर पे अवेलेबल उनको बोलो आपसे आंसर शीट छीन के ले जाएं, सो दैट यू डोंट गेट दैट माइंडसेट कि मेरे को तो बहुत टाइम है। उस माइंडसेट के अंदर करो, एग्जाम से पहले जो एग्जाम के टाइम है उसमें ही आप मॉक टेस्ट पेपर दो। अगर 2 से 5 आपका मॉक, अगर आपका एग्जाम है तो आप मॉक टेस्ट भी सेम टाइम में दो। माइंड को आप ट्यून करो, बॉडी को ट्यून करो, और उस टाइम में तो सोना नहीं है आपको। बहुत सारे लोग रात को लेट पढ़ते हैं, दोपहर को सो जाते हैं। 2 से 5 में आपको बिल्कुल नहीं सोना। एटलीस्ट एग्जाम से 15-20 दिन पहले, अभी का तो मैं उतना नहीं कह सकता हूँ कि कितना क्या आपका रूटीन है, बट एग्जाम से पहले बिल्कुल नहीं। तो माइंड को ट्रेन करो और साथ में आप प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो। और ऑडिट नहीं करना है बेटा, ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन है, देखो तो कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। सपोज ये क्वेश्चन है, आपने अगर पहली बार अटेम्प्ट किया होगा कहीं पे भी, तो आप, आई एम श्योर कि आपको मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करने में, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने में दिक्कत आया होगा, लेकिन वो फेस करो। जितना आप फेस करोगे ना, उतना आपका माइंड ट्रेन होता जाएगा। और एग्जाम में भी कुछ चीजें आपका ट्रिकी आ भी जाए तो भी आप, जैसे कॉस्ट शीट के जो एमसीक्यूज थे उसमें आप लोगों ने बहुत सारी जगह में जैसे कि गलती कर सकते थे, तो वो सारी चीजें नहीं होगा। ये जैसे क्वेश्चन है जिसमें मटेरियल और लेबर के कैलकुलेशन में थोड़े से ट्रिक है, एक बार आपने कर लिया ना ये मटेरियल और लेबर, आप आगे देखो आपका बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? Sir, Ritu. ऋतु। Yes, sir. हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Thank you, sir. और वेलकम बेटा। और थोड़ा सा अपने हिसाब से भी करो, रूल देखो, थंब रूल नहीं होता है, थोड़ा सब्जेक्टिव भी होता है। देख कि आपका पढ़ने का स्टाइल क्या है, आपका ये स्टाइल क्या है, लेकिन प्रैक्टिस तो चाहिए चाहिए। और प्रैक्टिस, जैसे मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, आप क्वेश्चन की सोल्यूशन देख के ऑडिट मत करो, क्वेश्चन और सोल्यूशन साथ में लेके मत बैठो। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखो आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। एक एरर बुक भी बनाओ आप, एरर बुक में लिखो कि कौन सी क्वेश्चन में, कौन सी चैप्टर की कौन सी टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना? आजकल आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट आए हैं टेक्नोलॉजी में, आप उसको यूज करो। आप एक एरर बुक बनाओ, आप एक्सेल में भी बना सकते हो, एक नोटबुक में भी बना सकते हो। आप देखो, आप देखते हो ना, मैं बहुत सारे क्रिकेट का एग्जाम्पल देता हूँ, वो कोच लोग बैठे रहते हैं कंप्यूटर और नोटबुक में कुछ नोट करते रहते हैं। क्या नोट करते हैं? कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, सो दैट वो रेक्टिफाई हो पाए। है ना? तो आपको तो अपना कोच खुद ही बनना है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ। यहाँ पे कोई नहीं करेंगे, बीओएस इज ऑलवेज देयर, इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज देयर, बट सबसे ज्यादा आपको अपने साथ रहना है। अभी जो जर्नल का थीम है वो है सक्सेस, उसमें यू सबसे इंपॉर्टेंट है। यू मीन्स आप, है ना बेटा? Yes, sir. टेक्निकल के साथ साथ थोड़ा मोटिवेशन भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट यू ऑल डू वेल इन एग्जामिनेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। मयंक, कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिर बोलो। सो वेरिएबल कॉस्ट बेटा आपका निकल गया है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 950 आ गया है। नाउ यू कैन कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन वेरी इजीली। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। कंट्रीब्यूशन का मार्जिन कैलकुलेट कर लिया आपने? सर 550। 550। सो एमसीक्यू में जाओ, आप एमसीक्यू में जाओ, एमसीक्यू में देखो कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। आंसर लिखने के टाइम में प्लीज सही लिखिएगा। बहुत सारे ये भी करते हैं कि कैलकुलेट ठीक से करते हैं और ऑप्शन मार्क गलत कर देते हैं, वो नहीं करना है आपको, है ना? यस सर। ये ऐसा हो गया कि आपने बोल्ड आउट कर दिया और नो बॉल कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ये थोड़े से टाइम लेके कर सकते एंशियस हो नहीं आप। होना आपको, वहाँ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगा के थोड़ा सा शांत रहना आपको। शांत रहो, ज्यादा ज्यादा घबराना नहीं है। क्वेश्चन पेपर देख के लगा बहुत डिफिकल्ट है, घबरा गए, घबराना नहीं है, घबराना। सर Next requirement of the question is determine the break even point in sales revenue. Here it is given in the sales revenue. Now उनसे पूछो कैसे कैलकुलेट होता है, बताओ बेटा ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट होता है, सब बता देंगे।
Fixed cost Fixed upon cost by PV ratio. फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, या तो फिक्स कॉस्ट का With the amount. डिवाइड करके सेल से मल्टीप्लाई करो कुछ। और पीवी रेशियो ना ये डेसिमल में भी निकाल सकते हो और किस में निकाल सकते हैं? परसेंटेज में। परसेंटेज में। मयंक सर ने बताया कि परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। सो आप देखिए आपके कैलकुलेटर में जो आपको ठीक लगता है आप उसको करिए और आप ब्रेक इवन पॉइंट। मयंक प्लीज एक्सप्लेन। सो जैसे आपने बताया आपको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अच्छे से याद है सबको। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द पीवी रेशियो। नाउ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज or the PV ratio is contribution margin divided by selling price per unit. Here it comes 0.366.7 or 36.67%. You can use both or any. So now the break even points come to 10 lakh divided by the 36.37%, which comes to 27 lakh 27,025 rupees. आप लोगों का आया नहीं आया? कैलकुलेट किया किसी ने? Yes, sir. यही है. ये आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑप्शन सी होगा। कहीं कभी कभी ना ये डेसिमल के यस अंकिता, कभी कभी बिकॉज ऑफ डेसिमल ना थोड़ा बहुत आंसर में वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्लोज फिगर अगर होगा ना तो उसको वॉच कर लेना एक बार। बहुत ज्यादा क्लोज फिगर होगा, वैसे तो उतना क्लोज नहीं होता है, लेकिन जैसे 3667 है, ये अगर आप 3 4 और 6 ले लो तो थोड़े से आंसर में वेरिएशन आ जाएगा। तो आप फिगर देख के करना, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपके आंसर में हो सकता है। सपोज किसी का 24 आ रहा है, 024 आ रहा है या 22 आ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे अभी सर ने बताया टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कंट्रीब्यूशन मार्जिन which comes in a unit. Now you can multiply it with the selling price per unit. उसमें ना आपका एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा होता है। अगर यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो ना, आपका एक्यूरेसी आंसर का ज्यादा होता है, क्योंकि पीवी रेशियो में क्या होता है, बहुत सारे टाइम में यू हैव टू यूज डेसिमल। ठीक है ना, वो पूरा फिगर नहीं आता है। तो इसीलिए अगर आप कंट्रीब्यूशन के थ्रू इफ यू कैन कैलकुलेट यूनिट और उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो, एक्यूरेसी का चांसेस ज्यादा है। तो एग्जैक्टली ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं तो आपको ट्रिक्स बता रहा हूं कि आपको मोर एक्यूरेसी किस में मिलेगा। Hope you understand the question. Now move to the next part of the question. If company want to achieve the target profit of 5 lakh, now the new contribution is earlier fixed cost. कैलकुलेट करने दो इनको। टारगेट प्रॉफिट है दिया हुआ है बेटा, ठीक है अंकिता? Yes, sir. टारगेट प्रॉफिट दिया हुआ है, आप कैलकुलेट करो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए। कैसे निकालोगे कंट्रीब्यूशन? क्या होता है इक्वेशन? Sales minus variable cost. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, पी प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ये साइड में लिख के रखो आप, जब भी क्वेश्चन करोगे ना साइड में थोड़ा सा लिख के रखो। अब बताओ आपको क्या दिया हुआ है इसमें? व्हाट इज बिन गिवन? Profit. गिवन। आपको आना कहाँ पे है? कंट्रीब्यूशन में। फटाफट बोलो कैसे आओगे? तो फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दें। हिमानी? सर फिक्स कॉस्ट को ऐड करके प्रॉफिट में। प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट को ऐड करना है, करो जरा। यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं। 5 लाख प्लस कितना है फिक्स कॉस्ट? 10 lakh. 15 lakhs. वेरी गुड, 15 लाख। आप क्या करना है आपको? Now we have to calculate the sales volume. डिवाइड बाय पीवी रेशियो। यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम यूनिट में है, यूनिट So में divide by contribution per unit. पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन Per unit is 550. 550। अगर ये सेल्स वॉल्यूम में रहता रुपीज में तो क्या करते बेटा? PV ratio. पीवी रेशियो से डिवाइड Or करते। you can multiply it with the sales price. हाँ, यूनिट करके सेल्स प्राइस से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी इसके करो। 15 लाख को 550 से डिवाइड करो और बताओ। 2727 यूनिट्स। हाँ जी, 2727 यूनिट्स। एग्जैक्टली आया है। यस सर। कुछ डेसिमल भी आया होगा? नहीं, 0.2727। 0.27। तो इसके अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना, राउंडेड अप करके। सबका आया?
उधर Yes, Yes, sir. Yes, sir. तान, नवल, तानिश, और इधर हमारे जो नाम दिख रहे हैं, देयर आर मेनी पीपल, अंकिता, कमेलिया, हिमानी, किरण जी, मेनी अदर्स आर देयर. So move to the next requirement of the question. परमिशन है नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने की? yes, Yes, sir. sir. चलो परमिशन दे दिया दोनों ने. ठीक है, चलो आगे. Now in this question हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10% से बढ़ गई है. अर्लियर हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? 950. अब जो हमारी 10% बढ़ गई है, दिमाग लगाना है, दिमाग. अब यहाँ पे आप बताओ मुझे कितनी वैल्यू आएगी? सर 1045. 1045. Correct. Now new contribution is वेरिएबल कॉस्ट आपका रिवाइज हो गया तो आपका कंट्रीब्यूशन भी रिवाइज हो जाएगा, पीवी रेशियो भी रिवाइज हो जाएगा. अगर चाहिए तो करो रिवाइज कंट्रीब्यूशन. बोलो रिवाइज कंट्रीब्यूशन. 455. 455. किसी ने 755 भी बोला था क्या? 455. 455. now we have to calculate 3296 units. क्या निकाला आपने? ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दिया? जी सर. अच्छा करो ब्रेक इवन पॉइंट. कितना था आपका फिक्स कॉस्ट? 10 lakh 10 lakh सर. हाँ, divided by 455. 450 5. 455 करो, कितना हो रहा है? 2198. sir. 2198 एग्जैक्टली. No, No, sir. sir. 2197.80. 2197.80. 97.80. ठीक है, ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है इनफैक्ट. सो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4, and you have got 2 marks. Almost everybody could calculate it correctly. Very good. Now the last question of this case scenario. So here we have to calculate the margin of safety in percentage. Now we have given the actual sales and the variable cost is increased by 10%. As जैसे सर ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ पे इंक्रीज गिवन है क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे डिक्रीज अगर गिवन होता तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट आपको कैलकुलेट करना पड़ता नहीं. सो अब मुझे बताइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? The profit divided by PV ratio for amount or contribution per unit for units. यहाँ पे हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? Sir, units वाला contribution per unit. पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकालना पड़ेगा. आपका जो सेल्स है ना माइनस बीईपी सेल, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है बेटा? कंसेप्ट वाइज में अगर आपको बताऊं, मैंने शायद पहले भी बताया आप लोगों को, अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो सो आप देखोगे कि जो पायलट है ना वो आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट बोलते हैं कि सीट बेल्ट का साइन जो है वो हटा लिया गया है. ठीक है ना, आप उस ऊंचाई पे पहुंच गए हो जहां पे आपको अब खतरा नहीं है. तो एक बार जब ब्रेक इवन पॉइंट में आप पहुंच जाते हो ना, उसका ऊपर का जो पोर्शन है वो है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक है, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? ओवर एंड अबव आपका ब्रेक इवन पॉइंट. जितना सेल आपका हो रहा है ओवर एंड अबव आपका ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. सो नॉर्मल कैलकुलेशन ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आप कैसे करते हो? सेल्स माइनस BP. और उसका अगर आपको रेशियो निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, तो ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है डिवाइडेड बाय सेल्स कर दो इंटू 100, तो वो उसका रेशियो हो जाएगा. और अगर आपका प्रॉफिट पीवी रेशियो दिया हुआ है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करने से भी आपका आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे सेल्स कितना है? एक्चुअल सेल नया sales दिया है 4000 units. 4000 यूनिट. वेरी गुड. और आपका ब्रेक इवन पॉइंट अभी निकाला था लास्ट वाले पॉइंट पे, कितना था वो? 2198 units. 2198. बस मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास कितना आ गया? 1802. नाउ इन परसेंटेज हमें निकालना है. करो कैलकुलेट. आप करिए. So 45.05. 1802 डिवाइडेड बाय
4,000. हाँ, इसमें बीपी मत ले लेना, बहुत सारे नीचे बीपी ले लेते हैं। ऐसे ऐसे गलती नहीं करना है, सब कुछ होने के बाद लास्ट में जाके कैलकुलेशन गलत। ठीक है ना? एमसीयू में ऑप्शन नहीं है कि स्टेप मार्किंग नहीं है बेटा, आइदर फुल और जीरो। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। वेरी गुड। कितना परसेंट आया? 45.05. 45.05. 45.05। वेरी गुड। सो 10 मार्क्स आपके पास। इसमें एक ही ट्रिक्स था, मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेशन और लेबर की कैलकुलेशन। उसके बाद वो सारा इजी पार्ट आपका हो जाता है। सो छोटे छोटे चीजें ऐसे अगर आपके क्वेश्चन में रहते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ के उसको निकाल लो और ट्रेन करो। जैसे ये एक ट्रिक हो गया, एक आप पिछले वाला क्वेश्चन में बताया एक ट्रिक। इस तरीके से जो जो छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, आप उसको उसको अपने माइंड के साथ करते रहिए। ऐसे 10-15 नए नए चीजें करेंगे ना, एग्जाम हॉल में जो भी आएगा आप क्रैक कर लोगे उसको। लेकिन आप बिल्कुल ही प्रैक्टिस मत करोगे तो नहीं होगा। ठीक है ना? क्रिकेट का एग्जाम्पल एक और दे देता हूं, है ना? वर्ल्ड कप देखे होंगे, T20 फाइनल में सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया था, Yes, sir. है ना? सबको Yes, बहुत अच्छा sir. लगा था, कितने खुश हुए थे सब। लेकिन उन्होंने अपने आप को Yes, sir. किया, प्रैक्टिस किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में कर दिया उसी टाइम में। तो आपको भी उस तरीके से एक दो ऐसे कैच भी आपको लेना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। सूर्य कुमार सर यादव मुझे आपको भी बनना है और आप बन भी जाओगे, सर प्रैक्टिस। मुझे आपसे एक गाइडेंस चाहिए थी। हाँ बोलिए। अब सर आप सबसे लोग पहले अपना, तो if you wish you can open your Zoom video. Admin, please allow them and let them ask question. सीधा face to face, let's face the question. अंकिता सर का सबसे वीडियो अलाउ पहले कर। तो थैंक यू सो मच, आप जो हमें यहाँ पर बैठकर इतना गाइड कर रहे हैं। और सर ये सच में बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है एग्जाम में, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। एंड सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे सर हमारा कोस्टिंग सब्जेक्ट में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और सर जैसे कि मैंने ना ग्रुप 1 क्लियर करने के बाद ही ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, और दैट्स वाई ना मतलब मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है कि मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन को रिटर्न में सॉल्व करूँ। तो सर प्लीज आप कुछ गाइड कर दीजिए जिससे मैं कुछ सिक्योर कर लूँ अपना अभी इस टाइम पीरियड में। स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस है ना अंकिता, वो तो आपको करना ही करना है, कोई ऑप्शन है नहीं है। यस सर। क्वेश्चन को वो करो, स्किप करो। और इसके बाद आप एक बार चैप्टर के कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन करने के बाद देखो मॉक टेस्ट पेपर कर पा रहे हो नहीं पा रहे हो। अल्टीमेटली आपका एम जो होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एमटीपी होना चाहिए। तो पहले आपको अपने आप को एक चैप्टर में, जैसे हम बहुत प्रिपेयर करते हैं उतना ना करके, जितना हो सकता है करके आप देखो एमटीबी में कौन सा चैप्टर आसानी से कर पा रहे हो, या प्रीवियस ईयर में कौन सा चैप्टर आसानी से कर पा रहे हो। उस चैप्टर को शायद उतना नहीं प्रैक्टिस करना है, जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है उसमें ज्यादा करना है, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। यही बता सकता हूँ। यस सर। यस सर, मैं अभी ऐसे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन चैप्टर किया, फिर मैं उसे एमटी और एमटीपी और आरटीपी से कनेक्ट करके देख रही हूँ कि क्या मैं ये सॉल्व कर पा रही हूँ। और फिर सर अगर टाइम बचता है तो फिर मैं एमसीक्यू पे जो बहुत सारे केस स्टडीज बेस्ड एमसीक्यू है मैं वो भी फिर सॉल्व कर रही हूँ। पर वेरी सर कहीं ना एक माइंड में फियर लगा हुआ है कि इतने कम पीरियड में क्या मैं प्रिपेयर कर पाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको मैं कैसे ओवरकम करूँ। अंकिता, डर के आगे जीत है, डरोगे तो जीत मिलेगा, यस डरना सर, नहीं। आज मेरा बर्थडे भी है इसलिए मैंने जान की थी आज मोस्ट प्रोबेबली ये सेशन ज्वाइन किया है ताकि मैं मोटिवेशन ले सकूं और आगे और अच्छा प्रिपेयर कर पाऊं। तो ऑल द बेस्ट बेटा, गुड विशेस फ्रॉम आवर साइड टू यू। ठीक है? थैंक यू सर। अब बाकी सारे जो भी क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कुछ और एमसीक्यूज। लेकिन मैं चाहता हूं आपके मन की क्वेरीज जो है, बेसिकली ये सेशन उसके लिए है। टेक्निकल तो आप करते रहते हो, लेक्चर भी करते हो, किताब भी पढ़ते हो, किताब भी हम ही लोगों का है। बट फेस टू फेस हम लोगों को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता आप लोगों से बात करने के लिए। वी डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन और टू लिसन फ्रॉम यू। So this is a perfect opportunity for all of you to ask question, and it's privilege for us also to answer all of your queries. So जो पूछना है you can ask. Sir, Whether I have sent you a question in chat box to you. yes, come please, come again please. Sir, I have sent you a question in chat box. Okay. Through which chat box? Host BOS faculty.
what is your name? Ishan. Viresh SV. आप पूछ सकते हो बेटा, देखा है Sir, आप? I wanted to ask, like one page given at the end for rough work at the end of MCQ question paper. It is not sufficient to solve for all the questions. So, is it possible to do rough work in pen in answer booklet as well? आपके एग्जाम के रूल क्या है उसमें? Sir, I think they allow if I do in pen as rough work as heading, I think they will. तो आप करो फिर, कोई दिक्कत नहीं है, Okay, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी whatever the rule are there within that corners you can do it. और आपको जैसे मनोज बोला है कि एमसीक्यूज रैपवर्क के थ्रू ही करना है, आपको प्रेजेंटेशन में बिल्कुल फोकस नहीं करना है वीरेश. यू नीड टू फोकस ऑन करेक्ट आंसर in MCQ. Please don't focus on presentation, full writing and etc. Please don't focus on that. Please focus only on correct answer, arriving at the correct answer. ठीक है वीरेश, वेरी गुड क्वेश्चन. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों का माइंड में होगा. इज इट क्लियर वीरेश? Yes, sir. एनी अदर? आप लोग अपना जूम खोल भी सकते हो, मतलब वीडियो खोल के आप बता सकते हो क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम. एडमिन अलाउ कर रखा है अशोक जी आपने? एनी अदर? Amelia, I think wanted to ask something. No, sir. That this time management thing which you already explained. Okay. Any other thing? Any other thing? Sir, in May exam, I got 42 marks out of 100 and I could attend only for 61 marks, so in 3 hours. आपका कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है वीरेश. आपको अभी टाइम मैनेजमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और ये जो अटेम्प्ट का नंबर है ना, इसको बढ़ाना है. आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो है जो भी आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना? सो आई एम श्योर यू विल डू वेल. टारगेट 40-50 नहीं करना है बेटा, 60 से ऊपर करना है मिनिमम. तो उसके लिए 80 to 90 आपको अटेम्प्ट करना है. इवन अटेम्प्ट अगर पूरा भी कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, और कर सकते हो. इतना टाइम मैनेजमेंट हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो. अभी तो 3 ही पेपर है बेटा एक ग्रुप में. प्रैक्टिस करो, खूब लिखो. लिखने का हैबिट नहीं छोड़ना है, ऑडिट नहीं करना है आपको कि पेपर क्वेश्चन देखो और सॉल्यूशन देखो एंड देन यू विल फील दैट मेरा तो सारा क्वेश्चन हो गया. ये इसमें नहीं रहना है आपको, है ना? ठीक है सर एक डाउट था. हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? सर कर्णिमा. हाँ कंटिन्यू में बोलो. सर डाउट था कि सर पेपर में हम फॉर्मूलों को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक SH, AH, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स को SH. हाँ बिल्कुल, जो नॉर्मल Yes, sir. नॉर्मल एब्रीविएशन जो है, जो हम लोग यूज करते हैं वो लिख सकते हैं. अगर Okay. आपको टिपिकल लगे तो एक बार फुल फॉर्म लिख के ब्रैकेट में लिख देना शॉर्ट फॉर्म, फिर आगे चलते रहो. ओके. एंड सर कॉस्टिंग में फॉर्मेटिंग का कोई इशू है, लाइक हम लोग अपने आप से फॉर्मेट्स कर सकते हैं? में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो सबसे बेस्ट है वैसे तो, लेकिन आप कर सकते हो अपना, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए. बट स्टडी मटेरियल में शायद बेस्ट फॉर्मेट दिया हुआ है जो अभी मार्केट में अवेलेबल है, कहीं पे भी अवेलेबल है. एंड एज पर लेटेस्ट जो भी अमेंडमेंट्स होता है उसके हिसाब से हम करते हैं. अमेंडमेंट्स एज सच तो नहीं होता है हमारे सब्जेक्ट में, बट कभी कभी जैसे CRR वगैरह में थोड़े बहुत कुछ चेंजेस होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट करते हैं. तो आप ओके. जो फॉर्मेट है यस सर. आप उसी में करिए. फ्रैंकली स्पीकिंग मॉडल सोल्यूशन भी आप अगर देखोगे, जब आप चेक करते हो तो उसी फॉर्मेट में होता है. ओके सर. एक्चुअली इतना सारा चैप्टर्स है तो हर एक फॉर्मेट को याद करना थोड़ा टफ हो जाता है. नहीं करना है तो फॉर्मेट में, आप सोल्यूशन करो ना, लेकिन कहीं पे डेविएशन होगा तो आपका आंसर करेक्ट होगा तो कोई इशू नहीं है. ओके. ओके सर, थैंक यू. वेरी गुड. और चैट बॉक्स के थ्रू कोई कुछ पूछना चाहते हो? मतलब एक और लिंक है जिनके थ्रू हमारे क्वेरीज आ रहे हैं. जो भी लोग हैं उसमें नवल, मुस्कान और तनीश और भी बहुत सारे, राधा कृष्णन थे, उन्नी कृष्णन इनफैक्ट वो भी थे,
और किसी को कुछ पूछना है? और इधर आप लोगों को और कुछ पूछना है जो जूम लिंक के थ्रू हमारे साथ है? सर, आई हैव अ क्वेश्चन। यस श्योर। सर, एक्चुअली जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसके अंदर फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो वो याद करने में बहुत डिफिकल्टी है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए? बेटा कंसेप्ट एक बार अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का समझ लो तो सबसे अच्छा है। थोड़े से जो बीओएस का रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, एक बार उसको देखोगे तो मेरे ख्याल से आपको फायदा होगा। रिकॉर्डेड वाला जो लेक्चर्स है उसमें ओके। कंसेप्ट बताया गया कि कौन सा फॉर्मूला कैसे आया है, ठीक है ना। फेस टू फेस होता तो मैं बता देता आपको। सारे फॉर्मूलाज के पीछे लॉजिक है, एक बार लॉजिक आपको पता लग जाए ना, एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है। एज ए टीचर आई एम श्योर मयंक ऑल्सो, हम लोग कुछ भी फॉर्मूला याद नहीं रखते। आप पूछना है क्या पूछना है पूछो, बता दूंगा। या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग कर लेंगे। तो अगर वो एक बार पॉसिबिलिटी है इवन मार्जिनल कॉस्टिंग में, पहले कंसेप्ट समझो और प्रैक्टिस ऐसा कर लो ना कि फॉर्मूला क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाएगा। यस सर। थोड़ा सा मेहनत करना है लेकिन चीजें बहुत आसान हो जाएगा। और एग्जाम हॉल में जो फॉर्मूला सोच के लिखते हो ना, आधे टाइम तो उसमें चले जाते हैं, वो भी नहीं जाएगा आपका। एब्सोल्युटली। यस सर। ओके। प्रैक्टिस जो मैं बात कर रहा हूं ना आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये दिस विल हेल्प यू इनॉर्मसली। और लिख के प्रैक्टिस करो। आपका क्वेश्चन देख के जिंदगी में ऑडिट बहुत करोगे, क्वेश्चन का ऑडिट नहीं करना है बेटा। क्वेश्चन तो यस आपको सर। हाथ से करना है, क्वेश्चन अपने हाथ से करना है और सोल्यूशन देखना है उसके बाद कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। प्रैक्टिस जितना करोगे इट विल मेक यू रियली परफेक्ट। आपका टाइम मैनेजमेंट अपने आप सॉल्व हो जाएगा, आपका करेक्टनेस बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका कंसेप्ट इंप्रूव होगा, आपका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे चीजों की बेनिफिट आपका होगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। और प्रैक्टिस के तो क्वेश्चन है अभी न्यू सिलेबस में आपके पास, पोर्टल में क्वेश्चन है, आरटीपी एमटीपी हम लोग दे रहे हैं, तो वो करो। और ज्यादा इधर उधर सुनो मत। आप लोग को मेरा ये रिक्वेस्ट है, मैं स्पेसिफिक कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अपने काम पे काम रखो, इधर उधर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक सारे यू। बच्चे हो आप लोग, और ये सारे क्वेश्चन आप ही ने सॉल्व किया। लेकिन हाँ, एग्जाम हॉल में ऐसे मेंटल स्थिति में आपको होना चाहिए। आप तो घर में रिलैक्स स्थिति में हो, आप उस टाइम में भी ऐसे थोड़े से रिलैक्स रहोगे ना, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। ओके सर। सारे सिंसियर बच्चे हो। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। थैंक एनी यू। अदर? जो भी मन में आ जाए आप हेलो पूछ। सर। यस हेलो। यस ऋतु, ऋतुराज। यस सर। सर, एग्जाम के टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। लाइक आई स्कोर्ड 38 लास्ट इन मे अटेम्प्ट। सो तो द प्रॉब्लम वाज कि कुछ क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहे थे, तो सर व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? अपने फैमिलियरिटी थोड़े कम होंगे, आपने पूरे स्टडी मटेरियल या पूरा प्रैक्टिस नहीं कर पाए होंगे। फैमिलियरिटी कम होने से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है। और अगर ऋतु अगर ऐसा प्रॉब्लम आ भी रहा है ना आपको, एक आधा क्वेश्चन में ही आएगा, अगर आपने प्रैक्टिस एनफ किया है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में रखो आप। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको थोड़ा बाद में रखो। इवन केस सिनेरियो भी होता है, तो केस सिनेरियो में कुछ तो आपको लगेगा, केसलेट्स में कुछ क्वेश्चन तो आपको फार्मूला बेस्ड आते हैं, वो तो कर लो। लेकिन प्रैक्टिस में कमी रही होंगी। इवन ये जो मार्क्स है आपका 38, इट शोज दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑलमोस्ट है, थोड़ा इंप्रूव करना है और प्रैक्टिस में कमी रही होगी आपकी। प्रैक्टिस तो करनी है आपको, थैंक यू सर। उससे फैमिलियरिटी बढ़ेगा। अगर आरटीपी एमटीपी आप एग्जाम कंडीशन में कर रहे हो, बिना आंसर देखे हुए कर रहे हो ना, आपको हैबिट हो जाएगा, आपका माइंड जो है ना ट्रेन हो जाएगा अननोन क्वेश्चन करने में। क्योंकि अभी आप लोग जो करते हो ना, वो सेम क्वेश्चन को करते हो। अननोन अननोन जो फैक्टर है वो शायद उतना नहीं रहता है जितना होना चाहिए। तो अननोन फैक्टर को करो, ठीक है ना, तो शायद ज्यादा होगा। मैं अगर अगेन एग्जांपल दे दूं कि अपने घर के जो प्लेयर है उनके साथ जैसे नेट प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो उतना प्रैक्टिस नहीं होता। लेकिन जब मैचेस खेलता हूं, बाहर के लोगों के साथ खेलता हूं फॉर एन एग्जाम्पल, तो हमें पता लगता है कि लोग भी कैसे कर सकते हैं। तो अननोन क्वेश्चन, अननोन मटेरियल, अननोन कंसेप्ट, इसके साथ अगर आप ट्रीटमेंट करोगे या इसके साथ अगर आप अपना फैमिलियरिटी रखोगे या फेस करोगे, आपको फेस करना आना चाहिए। फेस करोगे देन यू विल बी एबल टू फेस इन द एग्जाम हॉल। अगर प्रैक्टिस में फेस नहीं करोगे तो एग्जाम हॉल में नहीं कर पाओगे। एक बार में जाके नहीं होता है, बिना रिहर्सल के जैसे नहीं होता है, यहाँ पे भी नहीं होता है। प्रैक्टिस के बगैर तो नहीं होगा। तभी इतना प्रेस्टिजियस
क्वालिफिकेशन है, ये प्रोफेशनल डिग्री है ये, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना बच्चे। कर लोगे आप लोग, Yes, sir. अरे अच्छे हो, वेरी गुड। एनी अदर? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, यस। Sir, I'm Vanvi this side. I have a question that if I'm not able to appear for these mock test papers, upcoming mock test papers, then how will I be able to get these papers online from ICAI side? बेटा ऑनलाइन तो नहीं, आप एक काम करो, आप क्वेश्चन पेपर वेबसाइट में अपलोडेड है, ठीक है, Yes, sir. उसको डाउनलोड करो। घर Okay, पे sir. मामा को या घर पे जो भी अवेलेबल है उनको इन्विजिलेटर बनाओ। आंसर शीट Okay, मार्केट में मिलते हैं सिमिलर, उसको ले लो आप, उसके आंसर शीट बना लो स्टेपल करके, और अपीयर हो जाओ घर के अंदर ही 3 घंटे में, okay, sir. ठीक है। Okay, sir. उसके बाद आंसर डाउनलोड करो, पहले मत करना प्लीज, नहीं तो कोई फायदा नहीं है एमटीपी देने का। पहले आप वो सारे Yes, sir. पहले क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड करो और अपीयर हो जाओ, फिर आंसर देखो, फिर आंसर में अगर आपके आंसर में कोई वेरिएशन आ रहा है उसको देखो, उसमें कोई कंप्रिहेंशन की प्रॉब्लम है तो बीओएस को मेल करो कि ये मेरा आंसर है, ये आपका ऐसा क्यों है, या ये मेरे को समझ में नहीं आया। ही इज Okay, वेरी sir. पर्टिकुलर, द पर्सन हु इज सिटिंग विद मी टू रिप्लाई ऑल ऑफ योर क्वेरीज। CMI Thank you, sir. क्लियर? मैंने भी Yes, sir. Clear. Thank you so much. थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछना चाहते हो आपको, यॉर्कर, बाउंसर, जो पूछना चाहते हो, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते होंगे, बहुत सारे ख्याल आते होंगे, आपको लग रहा होगा ये सिली क्वेश्चन होगा, तो भी पूछो, वी वांट टू हेल्प यू। और हमारा कुछ भी इंटेंशन नहीं है, इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज देयर टू होल्ड योर हैंड्स। 5 MCQs हैं, एक बार कर लेते हैं, देन वी एंड द क्लास। तब तक अगर इनके कुछ क्वेश्चंस आए तो 4-5 MCQs हैं, आप लोग साथ साथ करते जाओ मेरे ख्याल से, है ना। पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ो और फिर आप लोग खुद प्लीज सॉल्व करने की कोशिश करो, है, विद इन टाइम लिमिट। फॉर्मूला सीधा लगाओ, अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेट करो, या तो मोबाइल को यूज करो। और एक ना, एग्जाम से पहले पर्टिकुलरली ये सोशल मीडिया से प्लीज दूर रहना। आई एम सॉरी, मतलब पॉलिसिंग नहीं कर रहा हूं आपको, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको डिस्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए। फिर इधर का न्यूज, उधर का न्यूज, ये सब चीजें देखते रहोगे, ये हो गया, ये हो गया। और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ऑलवेज गेट योरसेल्फ प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। शुरू हो जाओ। So here we have to calculate the economic batch quantity. Now we will start with the information given in the question. We have given the annual demand of 50,000 units. जो हमारी सेटिंग अप कॉस्ट है वो हमें गिवन है पर बैच की 10,000. कैरिंग कॉस्ट हमारे पास गिवन है पर यूनिट पर मंथ. You have to focus here is per month, which is ₹1. Now you will tell me the formula for EBQ. सेम फॉर्मूला 2AO upon C. हाँ, वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे डीएस यूज करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कैलकुलेट करो, बताओ जरा कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है। Sir, answer is 9129 units. Oh, it's already given. हाँ, ऑलरेडी गिवन। तो कैसे आया आपको पता लग गया होगा। 2 इंटू फिर 50,000 यूनिट करोगे, फिर इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय आपका जो कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट कितना था? So carrying cost in question is given per unit per month. We have to convert that to per unit per annum first. यस, वेरी गुड। सो इसमें वही एक ही ट्रिक्स है। सर एमसीपी इस बार का इजी है, आरटीपी बहुत ट्रिकी है। एमपीपी इजी है, आरटीपी ट्रिकी है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ही सिमिलर हैं।
लेकिन हाँ आरटीपी में स्कोप थोड़ा ज्यादा रहता है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देने का। एमटीपी में थोड़ा एनटीपी में विद इन हमें मार्क्स के अंदर एलोकेट करना पड़ता है। मार्क्स और टाइम, ऐसा ना हो कि आप टाइम में कर ही नहीं पाओगे, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे अगर 5 घंटा टाइम लगेगा तो वो भी थोड़ा सा देखना होता है। आप चाहते हो नेक्स्ट वाला टाइप करना? जी Yes, सर। sir. नेक्स्ट वाला टफ करना चाहते हो आप? यस सर। Yes. ठीक है, गुड। हाँ सर, थोड़ा टफ रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मंजूर है। ये बनाने वाले हम ही दो हैं। ठीक है, टफ टफ एमटीपी। नेक्स्ट वन। ओके सर, थैंक यू। ये आंसर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this question is for the standard costing. Here we have to calculate the material cost variance. Now we'll come with the information given in the question. The standard quantity for premium wood per sofa is 5 square feet. The company is a sofa manufacturing company. So here we have to calculate the material cost variance. So we have given the standard quantity of premium wood per sofa. Now the standard price per square feet of premium wood is ₹10 and actual production is 1000 units. And the raw material actually used is 5300 square feet. And the actual price is also given, which is ₹10 per square feet. Now we'll tell me the formula for the material cost variance. या सोच के बताओ थोड़ा फॉर्मूला। SQ into SP minus AQ into AP. So सर पहले रिवाइज करेंगे, फिर उसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। इसमें जरूरत भी नहीं इसमें है, रिवाइज करने की आपको नीड नहीं है। अगर यहाँ डिफरेंसेस ही नहीं है। यहाँ तक 3000 आएगा, ठीक है 5000 और 5300। 50,000 एंड 53,000। यस। और ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप हिसाब लगाओ अपने दिमाग में और माइनस करके आंसर लिख दो। इवन वर्बली भी हो सकता है ये क्वेश्चन तो। ठीक है, तो टाइम बचाना है जहां पे भी आपको मौका लगेगा तो। क्लियर दिस क्वेश्चन? यस सर। Now the next question is, here we have to calculate the activity rate. So we have given the information is budgeted overhead cost for the pool is 4 lakh. Expected activity was 4000 per types, and the actual overhead cost is 4,20,000 at an actual activity of 5,000 per types. Now you will tell me the formula for activity rate without looking at the solution. सर बजटेड ओवरहेड्स माइनस जो भी उसका है, दैट इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 4000. करेक्ट, वेरी गुड। So here you have to focus is we don't take the actual activity or actual overhead. वो कंफ्यूज करने के लिए है, और बहुत सारे टाइम में उसी से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, देन विल बी इन ट्रबल। So budgeted overhead divided by the budgeted activity, which is 4 lakh divided by 4000, which comes to 100 rupees per part type. ठीक है, Hope solution is clear. Now the next question is, we ये have to दोनों का कैलकुलेशन बताओ पढ़ के आप लोग, फटाफट बताओ। पहला वाला किसी ने कर पाया? Yes, sir. Ton kilometer is tons multiplied by kilometers per day times the number of days in a month. एब्सोल्युटली। सर ऑप्शन ए। 1000 ऑप्शन ए। 52,000। ऑल एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड।
Next question. Activity ratio. Activity ratio. Standard by budgeted. 2-3 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. Immediately it will come. 83.33%. Here you have to focus. We have also given the actual number of hours to confuse the student. If you remember the formula, you are not confused. Yes, sir. और गेस वर्क से होगा भी नहीं ऐसे एमसीक्यूज में, ये भी बता रहा हूँ आपको. यू हैव टू नो इट. ठीक है, आगे नेक्स्ट. So that's all from our side. I think let's not stretch it too lengthy. And अगर आप लोगों को, if you still have any doubt in your mind, whatsoever it may be, maybe next 1 or 2 minutes you can ask. Otherwise, I think we'll say our final words to you. कुछ questions हैं तो आप बता दो मेरे को या हम दोनों को. You can ask. Sir, when will we do this important points to remember the remaining topics? That we'll do in the next one. There will be another one, another webcast. That will be fine. Okay, sir. You like that? Yes, sir. We want one more section on important points to remember. Very good. We will do that. We will focus on that. Thank you very much. We are prepared for that as well. But we are little worried about the, what I will say, the performance in case scenarios and those kind of questions, which is new to all of you. So we hope that very quickly you will be getting adjusted to it. But anyhow, we'll keep that point in your mind in the next webcast. Thank you, Viresh. Any Sir, other? will I get email invite for that session as well, like this one? Sorry? Will I get email invite for Zoom session for that session Yes. as well? Yes. Zoom, and even you can open your videos as we don't have anything. You can ask any question. No problem. It is for you only. It is only for the students. We know that many will be on live and then many also watches on YouTube. But we'd like to see you on this kind of session live. In fact, that's our more focus area, more priority. Yes, he will be there. Viraj. Any other? Shall we conclude then? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much. In fact, from our side, let me thank you all for attending this particular session, and more importantly, asking some very good question. So one is asking question, other are also listening. That's the benefit of attending this kind of session. Very, very important, very, very good question you have asked, and we really appreciate your question, and that has made the session very interactive. And I'm sure that you have enjoyed this particular session rather than having a lot of stress on your mind. And I'm sure that the kind of words we have given, you will keep that in mind. And I'm sure that you all will do well in your CA examination as well as in your career. So from my side, myself, Dr. N.N. Sengupta and CA Mayank Jain, on behalf of Board of Studies, we'd like to wish you all best of luck for the coming days and coming examination and for rest of your life. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Yes.